I'm travelling high up into Pakistan's Swat Valley to the source of the floods that ravaged the country last July. 2 months on and the relief work is continuing, with over 4 million affectees in the northwest alone. This is the Ahmed family. They lost their father to the river. Salim Ahmed was stranded under a tree by the rising flood waters. His sons could see and speak to him, but they couldn't reach him. A day later, Salim was swept away by the great torrent of water. Along the way, we stopped off at a military base to pick up some relief rations. Flood evacuees were getting out of the helicopters, and some of them were still clearly traumatized by their experience. रोडों पे जड़ी ज़मीन थी वो चले गई, सब्जी सारी ख़राब हो गई है। अभी रोड का पता नहीं कोई बंदोबस्त निकलेगा तो होएगा काम, नहीं तो सब सब्जी जो है वो तबाह हो गई। यानी होटलों, दुकानें, मकानात तकरीबन 500 के करीब तादाद में 500-600 के करीब मकानात तकरीबन डैमेज हो गए, यानी उसकी ज़मीन भी ले गए। When we finally reach the upper valley, the damage is plain to see. All the way along the riverbank lies the debris and wreckage, buildings torn apart by the raging floodwaters. This is the remains of the hospital in Madian. Thousands of refugees are heading down the river to find food and shelter, but the going is tough and access isn't what it used to be. Crossing the river safely is an essential part of life in Swat, but over 40 bridges have been destroyed by the floods, and now people are making do with temporary chairlifts. Rebuilding this shattered infrastructure is a daunting task. Some temporary roads have been built, opening up areas previously cut off. Animals and people are starting to move again. But there's much to be done. हमारे इलाके का हमें सिर्फ रोड का मसला है, तो अब उसका रोड बहुत डैमेज हुआ है, तो सबसे पहला मसला हमारे रोड का है, वरना ये मौसम सरमा जो आ रहा है, तो कलाम में आज रात को बारिश हुई थी, पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी ताज़ा। सर वजह उधर भी जाके सर तकरीबन सुबह लोग चले जाते हैं, लाइन में खड़े रह जाते हैं सारे दिन, फिर शाम के टाइम कहते हैं कि नहीं आज नहीं देना है, वापस चले जाओ, तो उस तरह लोग बहुत यानी कंफ्यूज हो जाते हैं। In the wake of this flood, which is the worst in living memory, some Swat residents are wondering about its ecological causes. देखो कलाम एक ऐसे एरिया है कि ये पहाड़ी इलाका है, उसकी ज़मीनें पुराने ज़माने से ये दरिया के किनारों पे आबाद थे ना, तकरीबन 1000 साल को 1500 साल को हमारे एल्डर्स जो हैं वो इस तरह बता रहे हैं। तो जब ये सैलाब आए तो मानसून यहाँ नहीं हुए थे, कलाम मानसून के ख़िते में नहीं आते, तो खिलाफी तवक्को इस साल मानसून की बारिशें 3 दिन 3 रात इस तरह शुरू हो गई कि इधर से उधर आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसमें तमाम पहाड़ी नदी जो कैचमेंट एरिया था उससे सैलाब निकल के आया, तो दरिया के किनारे जो ज़मीन थी, फसलें थी, जिसके घर थे वो उड़ा ले चला गया, लेकिन झीलें उधर नहीं बनी। जहाँ डेंस थी जंगलात, घने जंगलात थे, उधर से सैलाब नहीं निकल सका। जहाँ जंगल घने नहीं थे, इधर उधर के दरख्त थे, उधर से सैलाब हुआ है। जिधर भी जाएं आप, जहाँ सैलाब हो यहाँ देखें तो उधर जंगल नहीं है या बहुत कम है। A small fleet of American helicopters are flying through the Swat Valley as part of the huge relief effort. Helping with the transport of refugees and relief, we asked if they were really welcome in an area that just over a year ago was largely controlled by the Taliban. We saw the helicopters going over a moment ago with the Americans bringing supplies into the valley. Have they brought any supplies for your area?
نو د خلکو خو ضرورت دی کنه هغه د امریکن دی که د پاکستان دی دوه متاثر دي دوی ته خو ضرورت د هر شی دی که هغه د فوډ دی که د هغه د شیلټرو دی کنه څنګه چې دلته کې دی پوره تل دی د ټولو ته ضرورت دی خلک هر څه باندې پوهېږي څه شي ضرورت دی ضرورت خو د هر شي دی. I got a different response from Colonel Ubaidur Rahman, a senior Pakistani commander in the valley. Well, if drone attack continues at the same time, we see 2 choppers flying over our valley, and at the same time we hear a news of 5 drone attacks in Fata. So you can well measure that whether it will facilitate or it will fade away the support. But the important thing is that at present they are one of the major facilitators, donors or assisters of the world during this particular disaster, not even in this area, I would say that throughout length and breadth of Pakistan. सर क्योंकि लोग अमेरिका से नाराज़ है फ़िलहाल तो यही लोग हैं तो सर कि नहीं अच्छा नहीं हो रहा है अच्छा बात जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं हमारे इतने हमें रिलीफ दे रहा है इतना हमारे साथ जो कुछ कर रहा है अच्छा कर रहा है तो बाकी ऐसे लोग हैं सर उधर एजुकेशन कम है तो इसीलिए थोड़ा सा लोगों के माइंड भी ना वो थोड़ा अलग किस्म के है तो जो एजुकेटेड लोग हैं वो तो समझ रहे हैं जैसा जैसा भी हो रहा है अमेरिका जो कर रहा है और कोई मालूम जो अपनी आर्मी कर रहे हैं लोगों की माइंड की बात है सर. The Taliban are taking advantage of the catastrophe. In August, militants torched 2 schools in Kalam, the same area where the American airlift is concentrated. It raised a question: is Pakistan's army overstretched by the floods? The period of worry is over. That's the beauty. The majority of the population of this area, they did not like what happened because of those militants. The locals are, as I've said earlier, hand in gloves with us. हमें भी यही कह रहे हैं कि सर आप लोग जो आर्मी के साथ ताउन कर रहे हैं यही ताउन ख़त्म कर दें आप लोग वरना आप लोग की अपनी जिम्मेदारी धमका रहे डरा रहे सर यही. तो लोग डर गए सर लोग डर भी रहे हैं क्योंकि हर बंदे को अपनी जान प्यारी है क्योंकि यार पता नहीं कहाँ से निकलेंगे किस टाइम आ जाएंगे उनका तो कोई ना कोई ठिकाने का पता है ना कोई जगह का पता है पता नहीं कहाँ घूम रहे कहाँ फिर रहे कहाँ से खा रहे कुछ पता नहीं है सर. लेकिन मौजूदगी अब तक है सर मौजूदगी अब तक है जो वो खुद फ़ोन पे कह रहे हैं कि हम फ़लाँ जगह पे क्योंकि फ़ोन जो करे उसे पता चलेगा कि कलाम के एरिया में ही है जहाँ सिग्नल चल रहा है वही एरिया में तालिबान भी है. Meanwhile, as a semblance of normality slowly returns to Swat, families like Salim Ahmed's are struggling to keep going, as well as dealing with the trauma of loss. आगम सबक वही